state and the situation we are in, shortage of everything, there's not much goods in the caravan, in the business trip which we will be sending to Syria. So he says, "O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, why don't you approach Khadija?" Why don't you approach Sayyida Khadija and ask her that I will lead your caravan to Syria? And then Abu Talib says to the Prophet ﷺ that yes, she is a wealthy woman, a wealthy merchant, a wealthy business lady, and she has a lot of business goods, trade goods in her caravan as well. So why don't you ask her that why don't you appoint me for your to lead your trades business trip to Sham, to Syria? So Aga Karim sallallahu alayhi wa sallam, he says to Abu Talib, "No, I will not approach her, rather I will wait and see if she approaches me herself." मैं उनसे बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं इंतजार करूंगा कि सईदा खदीजा खुद मुझसे बात करे. Now this conversation which takes place between Janab Abu Talib and his nephew Janab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, somehow Sayyida Khadija finds out कि ये चचे और भतीजे के दरमियान गुफ्तगू हुई है. चचे ने ये कहा है और भतीजे ने आगे से ये जवाब दिया है. Now keep in mind, she was already looking for someone who was known for their trustworthiness, for their truthfulness, for their great character. Now when she finds out this, she sends someone to ask the Prophet sallallahu alaihi wasallam and to request that, "O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadija wants to appoint you to lead her business trip to Syria." उन्होंने फिर पैगाम भेजा कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप जैसा सादिक और अमीर इंसान, सच्चा इंसान, अच्छे किरदार का मालिक इंसान, उभरता हुआ नौजवान, 25 साल का नौजवान हो, भी अल्लाह का हबीब है, पूरे हुस्न का भी मालिक हो, पूरे अरब में उसके चर्चे हो, तो हुजूर ने फरमाया ठीक है, मैं जाऊंगा. Now Hazrat Bibi Khadija radiyallahu ta'ala anha, she appoints Maysara, who was her slave, to serve the Prophet sallallahu alaihi wasallam during this trip, and to keep a record and an eye on everything that happens revolving around the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So Bibi Khadija ne, जो आपका गुलाम था मैसरा, उनको कहा कि आप हुजूर की खिदमत भी आपने करनी है और कोई भी मामला हो उस पर गहरी नजर रखनी है. मैं देखना चाहती हूँ जो मैंने सुना है ये वही मोहम्मद है. So the business trip sets off to Syria. Now when they reach Syria, they stop by this church, and there's a monk, Rahib, who lives in that church. And Aka Karim sallallahu alayhi wa sallam, he goes and stands under this tree. Huzur ek darakht ke niche tashrif le gaye, wahan aap khade ho gaye. Now that monk, he comes to Maysara, he says, "Who is this youngster?" ये नौजवान कौन है? वो जो ईसाई राहिब है, वो मैसरा से कहते हैं कि ये जो दरख्त के नीचे है, ये कौन है? And he says he's just a youngster from the people of Quraysh. You Quraysh के जवानों में से एक नौजवान है. उसने कहा नहीं, तू तो कहता है ये कुरैश के जवानों में से एक नौजवान है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस दरख्त के नीचे आज तक अगर कोई खड़ा हुआ है तो अल्लाह का नबी ही खड़ा हुआ है. He says no one has ever gone under this tree and stood there other than a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. यानी आज तक जो भी इस दरख्त के नीचे खड़ा हुआ है वो कोई आम इंसान नहीं होता, वो अल्लाह का नबी ही होता है. आगे फिर ये भी आता है किताबों के अंदर
he goes to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That monk, wo jo rahib tha, wo huzur ke paas gaya, and he kisses the feet of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He says, "Amantu bik, amantu bik, main aap pe iman lata hu. I declare my faith on you. Wa ashhadu annaka alladhi zakarahu Allah fi at-Tawrah." And I declare that you are the one, zakarahu Allah fi at-Tawrah, who Allah has mentioned in the Tawrat. कि आप ही वही अल्लाह के नबी हैं जिनका जिक्र अल्लाह ने तौरात के अंदर किया है। और आगे ये भी अल्लाहु अकबर, हजरत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, she said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam कि इन्नी क़द रग़िबतु फ़ीका लिहुस्नि ख़ुलुक़िक व सिद्क़ि हदीसिक. Yes, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was very great, good looking, very handsome, no doubt. Well built in body as well, no doubt. But she says, what made me send you the proposal was husni khuluqik, was your beautiful character, was sidqi hadisik, was your truthfulness. ये दो मैंने जो चीजें देखी हैं, इस वजह से मेरा दिल चाहा कि मैं आपके निकाह के अंदर आ जाऊं. And today we see the youngsters, a lot of times these youngsters they spend in the gym. है कि नहीं है? Gym में जाते हैं कि a very six-pack, so Muslims over there, for what? To impress the other gender. मुझे माफ करना है, ऐसे ही होता है, यही मकसद होता है इनका. इल्ला माशाअल्लाह. Yes, a lot of them go to the gym for the actual health purpose, but some of them, or maybe majority of them, it is to impress the opposite gender. I'm very well built. You being well built does not matter as much when it comes to you being the husband. You having a six-pack does not matter much when it comes to you being a husband, a partner. What matters is how strong are you in your iman. How well is your iman built? How well is your taqwa? How strong is your taqwa? How strong are you emotionally? How strong are you financially? How strong are you when it comes to supporting one another? And this is what the Prophet ﷺ showed to the whole world by marrying a 40-year-old. ये बातें जिनकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए. What do you think your partner is going to do with your six-pack when you can't put food on the table? Are you just going to show her your muscles? Just your six-pack, that's it? And emotionally you are weak? You are not there to support your partner? इसलिए इन बातों पे ज़्यादा तवज्जो करें. अपना कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग करें, अपना ईमान मजबूत करें, अपना तकवा मजबूत करें. जाके को काम काज करें, कुछ जिम्मेदारी का एहसास करें, फिर जाके शादियां कामयाब होती हैं. खैर बात कहीं और न चली जाए. So, Sayyida Khadija radiallahu ta'ala anha. Now Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam, when Allahu Akbar, when he announced the prophethood, जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया, so obviously Aka Karim sallallahu alaihi wasallam, they used to isolate themselves from the people and used to stay days and nights in the cave of Hira. ये जो जबल नूर आप देखते हैं, जहाँ पहली वही उतरी थी. He used to go there. Now Sayyida Khadija, obviously, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam announced his prophethood, he was at the age of 40. ऐसे ही है ना? So she must have been at the age of almost 55. मैं भी रोजा रखिया तो सब भी रखिया. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam married Sayyida Khadija, how old was he? 25, and she was 40. Now when the announcement of the prophethood took place, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was at the age of 40, and Sayyida Khadija would have been almost 55. हाँ, बिल्कुल ठीक है. Now at the age of 55, a grown-up lady. Now Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam used to stay in the cave of Hira, meditating, doing this yad of Allah subhanahu wa ta'ala, this zikr of Allah, deep meditation you can say. Now Sayyida Khadija radiallahu ta'ala anha
people who have climbed the cave of Hira, it is not easy. आजकल तो बड़ा आसान है. उस वक्त, imagine a 55-year-old climbing that cave of Hira, steep mountain, and with food in her hand. खाना हाथ के अंदर है. क्या हुजूर को पेश करना है? And at times, days would go past, and the Prophet ﷺ would not even take one morsel of food. दिन गुजर जाते और हुजूर एक लुकमा भी खाने का ना तनावुल फरमाते. क्यों? अल्लाह की याद में इतने मशगूल हुआ करते थे, इतने मगन हुआ करते थे, खाने की परवाह नहीं हुआ करती थी. Now she is coming, climbing up that mountain of Hira, a steep mountain, a 55-year-old with a pot in her hand, with food for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. इधर वो आ रही है, उधर जिब्रील आ रहा है. Angel Jibreel, he descends from the heavens and he comes to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He says, Inna Allah yuqri'u. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala is sending salam upon Khadija. जिब्रील आए और इसकी या रसूल अल्लाह वो आपकी वो मोमिनों की माँ, मोमिनों की माँ आ रही है. The first lady in Islam, Sayyidah Khadija, she is walking up the mountain of Hira with some food in her hand. When she comes to you, say to her, tell her that Allah has sent salam for you, and also that Allah has prepared a palace in Jannah made out of diamonds and pearls. उनको बशारत दें कि अल्लाह ने उनके लिए जन्नत के अंदर मोतियों से महल बनाया है. Now when she comes to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Aka Kareem sallallahu alaihi wasallam says to her, Allah ne salam bheje. Allah has sent salam to you, mentioned you by name in particular, and sent salam to you. And look at her intellect. तुझे मैंने आपको मैं तुझे ना आखा सलाम अलैकुम तुझे क्या आखसो ते अल्लाह के सलाम ते जवाब की होगा. तो this was the intellect. क्या सोच थी भाई? When the Prophet sallallahu alaihi wasallam told her that Allah has sent salam, she says, Inna Allah huwa salam. Allah तो है ही सलाम, उसको सलामती की जरूरत नहीं है. Then she says, Wala Jibreel as-salam. Jibreel पे भी सलामती हो. Allah तो सलामती वाला है, वो तो सलाम है. He is not in need of my salams. वो तो सलामती वाला है, वो सलामती देने वाला है. जिब्रील पे भी सलाम हो. And wa alaykas salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Then she says, oh the Prophet sallallahu alaihi wasallam, salam be upon you, and the rahmat of Allah and also the barakat of Allah subhanahu wa ta'ala. और आगे के चलते जाए. Her love and dedication and loyalty to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. For 25 years, from the Ummahatul Mu'mineen, she was blessed to spend the most time with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The period of 25 years. 25 साल जिनको हुजूर की कुर्बत का शरफ रहा है, हासिल रहा है. हुजूर के बिस्तर पे जो आराम फरमा रही है, उस खातून का नाम खदीजा दुल कुबरा है. 25 years. And in that 25 years, when the people of Makkah boycotted the Prophet sallallahu alaihi wasallam and those who were around him, she was also the one who stood by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. आपने हुजूर का साथ दिया और इस मुश्किल वक्त में हुजूर को अकेला नहीं छोड़ा. बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे हदीस के अंदर फरमाया कि Allah has not blessed me with a better wife than Sayyidah Khadija. अल्लाह ने खदीजा से बेहतर मुझे कोई ज़ौजा नहीं दी. क्यों? आपने फरमाया, when everyone rejected me, she believed in me. जब सबने इनकार किया, मेरे पैगाम को ठुकराया, ये वाहिद खतून थी जिसने मेरा कलमा पढ़ा था. When people denied me, she bore witness to me. When people refused to give me anything, she gave her all wealth to me.
जब लोगों ने मुझे कुछ भी देने से इनकार कर दिया तो ये खदीजा थी, इतनी मालदार खतून थी, पूरे का पूरा माल मेरे कदमों के अंदर ढेर कर दिया था। This was Sayyidah Khadija radiallahu ta'ala anha. And when she was about to pass away, Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam came to her deathbed. फरमाया खदीजा ये बड़ा औखा वेला आ गया। It is a time of hardship that you are leaving this dunya. अब तू इस दुनिया से रुखसत हो रही है, तू इस दुनिया से जा रही है। तूने मेरा बड़ा अच्छा साथ निभाया है, अल्लाह ने मुझे औलाद तुझसे दी है और सैयदों की नानी का नाम खदीजा है। आज दुनिया में जितने सैयद हैं उनकी नानी का नाम खदीजा है। And let me tell you, for those 25 years, the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not marry anyone else. इधर खदीजा की वफाएं देखें और मेरे नबी की वफाएं देखें, उनके होते हुए कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया। The Prophet sallallahu alaihi wasallam said to her, yes, this time has come, time of hardship. You are leaving this world, you are leaving this dunya. मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फरमाया इसके अंदर भी अल्लाह ने बेहतरी रखी है। Allah has kept good in this world। क्या आपने फरमाया खदीजा को बनाना नहीं है, तू सिर्फ दुनिया में मेरी बीवी नहीं है, अल्लाह ने जन्नत में भी मेरा तेरे साथ निकाह फरमा दिया है। You shall be my wife in the akhirah as well। हम यहाँ भी इकट्ठे हैं, वहाँ भी इकट्ठे रहेंगे। This was Sayyidah Khadija radiallahu ta'ala anha। Allahu Akbar। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, there are 4 best women। फरमाया 4 औरतें हैं जो तमाम जहानों की औरतों में से सबसे आला जिनका मकाम है। हुजूर ने फरमाया one of them, फरमाया जनाब बीबी मरियम, the mother of जनाब ईसा अलैहि सलाम। Then he says the wife of the Firaun, Hazrat Asiya। Then he says बीबी खदीजा, फिर फरमाया बीबी फातिमा। और यहाँ आपको एक बात बताऊं, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not marry anyone else until she was alive। और इधर फातिमा जब हुई तो आपने हजरत अली को भी फरमाया, अली फातिमा के होते हुए दूसरा निकाह नहीं करना, क्योंकि अगर फातिमा को दुख होगा तो मुझे दुख होगा। जिसने फातिमा को खुश रखा उसने मुझ मोहम्मद को खुश रखा। ये थी मेरे हुजूर की अताएं और वफाएं। There's a lot which could be said about the great character of Sayyidah Khadija radhiyallahu ta'ala anha। बस एक अर्ज करूंगा, उनके इसाले, उनको हमारा साले सवाब क्या चाहिए। Us being her sons, वो हमारी माएँ हैं, हमारी माँ है वो। हम क्या कर सकते हैं कि आज जुमे के बाद जो आपने 2 नफल पढ़ने हैं ना, 2 नफल पढ़े तो बाद जो दुआ करो, या अल्लाह these 2 नफल which we have prayed, we give this isale sawab to our beloved mother Khadija। ए तुसी काम कर लो तो इंशाअल्लाह माँ फिर क़यामत वाले दिहाड़े जन्नत में नहीं जान देगी। अल्लाह पाक मुझे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।